तो अब हम लोग क्या बोल रही हूँ मैं? Old West is we bring in truckloads and truckloads of dirt and we lay it out on the street so it looks nice and dusty like the Old West. Another illusion. Take a look to your left. See that cute little pond there? Haha. It's an immense pleasure to welcome you to their home, Little Europe. Check it out. Even the streets are cobblestone as we enter this portion of the back lot. This area has been around since the 1920s. Now, if you recognize this portion of the back lot and you're not a fan of monster movies, check out your screen. Maybe you're recognizing The Good Place. Good Place is fun. Starring Brandy, Whitney Houston, and Whoopi Goldberg, and it's also the fictional country of Genovia from Princess Diaries 2, A Royal Engagement, starring Anne Hathaway and Julie Andrews. Now, back in the days of those early... Oh, George, get out of the water, man! Poor George. He was a little too curious for his own good. Don't worry, folks. Martin's going to keep us safe. We're going to move ahead and hide behind these very flammable barrels of gasoline. Oh no, the shark just took the pier! Alright, post-shark attack pop quiz, everybody. Can anyone tell me what kind of shark that is out there? Yeah, a great white is an excellent guess. Remember, we're in Hollywood, though. It's a plastic shark. Party rockin'. Alright, see if you can crane your neck to the left as we pass this small suburban town of Colonial Street. It's currently closed for filming, folks, but if you're a fan of Desperate Housewives, you might recognize the area back there as Wisteria Lane. Also used for the new series Never Have I Ever by Mindy Kaling. Their second season just released on Netflix. Moving here from the Mojave Desert cost them an additional $200,000. It's always the shipping and handling, folks. We're going to stop the tram here for a moment so you can get some awesome photos and so I can share an interview with you from production designer Rick Carter and director Steven Spielberg. The airplane is perfectly designed for a set that is all designed around the vision of Steven. For them to sit down and talk about the world. That's how what if it says the weather goes down right in a big wave? Because it's just something you don't see. Get in. Since the homeowners insurance commercials, as well as featured in Nicki Minaj's music video Fly with Rihanna, they were dancing on the tail end of the plane over there on your left-hand side. My favorite thing about this portion of our backlot is we sometimes use it to train rescue dogs for emergency situations. Alright folks, here's your 10-minute warning. In just under 10 minutes, we'll be back in the theme park one last time. Alright, on your screen is a scene from Sully. Now in Sully, a plane crashed in the middle of the Hudson. In order to recreate that for the movies, you can't exactly go crash a plane in the Hudson, so instead filmmakers came to the Universal backlot and anchored their plane in the bottom of that giant... You're under arrest right now! Ladies, just back up a little bit. Got it. It's lightweight. First of all, I don't work for you. Oh, really? Well, tell me, Roman, who do you work for? We don't work for nobody. Cop, I suggest you clear out of here, otherwise we can't guarantee your safety. Guarantee my safety? I'm the one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours. Escort this now. One last time, on behalf of myself, Savannah, your tour guide, Martin, your driver, and everyone here at Universal, thank you so much for joining us here at Universal Studios Hollywood, the entertainment capital of LA. Time to rock and roll. Bring the noise. Our studio tour is finally over and अभी हम लोग आ गए ऊपर वाली साइड एंड ऊपर से जो एरिया है ना ये कुछ ऐसा दिखता है. इट्स अ ह्यूज एरिया गाइस. पूरा घूमने में हमें कुछ 40 to 50 मिनट्स लग गए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से थीम पार्क में एंड जो हमने नहीं देखा है वो हम देखेंगे अभी.
राइट नाउ टाइम इज़ 8:30 एंड जो स्क्रीन पे आप टाइम देख रहे हैं दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली अभी 8:30 बज चुके हैं एंड बस हाफ एन आवर में पार्क भी बंद हो जाएगा। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे होटल एंड वाइंड अप करेंगे आज का दिन। When directed by the security, only we have cell phones and keys, simply hold them above your head. I've been doing this 15 years. We know a lot. Most of the actors' homes that we see today have got properties in Chicago. They've got super apartments in New York. So they film there a lot too. सो गाइज अभी हम लोग निकले हैं हॉलीवुड सिटी टूर के लिए एंड सबसे पहले हमें ये लेके जाएंगे बेवर्ली हिल्स और वहाँ पर हमें दिखाएंगे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर। आई मीन बाहर से ही दिखाएंगे, अंदर से नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली। एंड कुछ और जो फेमस प्लेसेस हैं वो भी दिखाएंगे। सो लेट्स गो। But there are some tight streets to the side. And if you've got a car here or access to an Uber, there's a place called Lake Hollywood. And there's a big park and you can hop out and the lettering is huge. Which one? The house up the top on the left with the wooden triangular. Okay. Where that white man's going up. So basically they've been up there for about 4 years now. The brown one. I had a guy from Russia sitting next to me. The house restored it. It's worth around 16 million today. So that's the front gates just here. That's a fun one. So we've got a filming location coming up on the left down here. It was used in the movie Lethal Weapon 2. Which one? I'll show you. Which one? Left side? When I get to it, it's easier. Okay. Yeah. So just here on the left. एंड इन घरों के जो प्राइजेस है ना, ये सुन के आप लिटरली शॉक हो जाओगे जैसे अभी हम लोग हुए हैं। लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 to 25 million एंड गोज अप टू 40 million, 50 million, 60 million एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स, नॉट इन रुपीज। रुपी में आप कन्वर्ट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि घर Delivery कितने and में। hopefully the gate will open. Kylie Jenner, Kardashian coming up. So Kylie Jenner, left hand side. They call it the Fortress, the youngest billionaire on our tour. Young Kardashian. Now this was actually my most embarrassing moment as a tour guide. It took place here a year ago. There were two guys smoking cigars on the front and I was just joking. This is Mr. Clooney on the right. Oh, that's not. 2 gates. Wow. He's so rich. We got 2 gates. That's weird. So Larry King lived here. The talk show host Larry King lived here on the right. एंड गाइज अभी हम लोग आ गए हैं वन ऑफ द फेमस एंड द कॉस्टलीस्ट स्ट्रीट्स इन द वर्ल्ड। यस, इन द वर्ल्ड एंड दिस इज रोडियो ड्राइव एंड इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। एक बार गूगल करके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। Yellow Rolls Royce Phantom on the right makes this thing look very cheap right now. Defoe in front of us on the right, William Defoe played the Green Goblin. ओके गाइज, हॉलीवुड सिटी टूर इज ऑल्सो ओवर एंड काफ़ी मज़ा आया हमें। आई थिंक आपको भी आया होगा। बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके कैसा लगा। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। कहाँ अभी पता चलेगा आपको। Making my moves, can't fake the truth. She fought for me 'cause she knew they didn't know.
वाला बीच एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बीचेस इन LA। वैसे यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, सॉरी बहुत तेज़ पानी आ रहा है। आई टू कम हियर बिकॉज इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और ये ना प्राइम लोकेशन है, सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ बहुत सारी शूट हुई हैं और काफ़ी अच्छा बीच है। बीच जैसे होते हैं नॉर्मल वैसा ही बीच है, नथिंग स्पेशल, नथिंग फैसिनेटिंग। जैसे गोवा के बीचेस है ना, कैलनकूट बीच या फिर और जो वेगाटोर बीच, जो भी फैमिली बीचेस हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, वैसा ही क्राउड यहाँ पे भी है। बीच के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी राइड्स भी हैं, तो बच्चे यहाँ पे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। Do you wanna say something, Parthiv? Come here. So do you love LA? Which one is better between New York and LA? Yes, I also like New York. I think LA is overhyped. Why are you coming here? Doing, babe? Parthiv आपको बताएगा कि उसको मज़ा आया या नहीं. So Parthiv, tell me, did you enjoy? Yes. Really? How much you enjoyed? A lot. So what? Where are you going? Okay. Wait. So पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बस वो आई थिंक 10-15 मिनट्स के लिए गए थे ना आप अंदर, No. और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि फटाफट बाहर आ गया। Anything else you wanna share? No? So we are just gonna leave this place और ये हमारा लास्ट डे है लॉस एंजलिस में एंड आई थिंक हमने काफ़ी इंजॉय किया। So yes or no? Yes. 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 हम लोग लेंगे कैब या मेट्रो और फिर हम लोग जाएंगे होटल और हम थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमेंगे, डिनर करेंगे एंड देन वी विल स्लीप। सो सी यू सून, बाय। then we get back. लेट्स गो back, we are getting late. Come on, come fast. Tomorrow we going to New York. No, tomorrow we are not going to Day after New York. tomorrow. We are going to some new place. Day after tomorrow. Come on, hurry up. Why? नाउ गाइस, हम लोग पहुंच गए अपने होटल के पास एंड हमारे होटल के सामने ना एक बहुत बड़ी सोवेनियर एंड गिफ्ट शॉप है, दैट इज़ ला ला लैंड एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आई मीन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी कभी ना कभी यहाँ पे शॉपिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो ये हमारा आज लास्ट दिन है लॉस एंजलिस में, कल हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, कुछ सोवेनियर्स वगैरह यहाँ से मैं खरीदूँगी, तो मैं अभी करूँगी वही और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड बताना ज़रूर आज का ये व्लॉग कैसा लगा।